Good morning. In your previous class, we were discussing about your importance role or major role of operating system. Today, we are going to discuss about your application software and categories of application software. The application software, students, as you know that application software is intent to perform a particular task, and that task can meet your demand in the day-to-day life. But system software is here to perform a task from computer point of wise, or you can say to start a computer for booting purpose, to operate the computers, for conversion from high-level language to binary language, that's the language process. So this kind of jobs can be performed by the system software. But application software is particularly here for us. Means if we are going to perform some tasks with computers, then we should take the help of some application softwares. Here, application software particularly, is here to perform a task which can meet our demand. Suppose you are going to listen to music, then there is one kind of application software. And if you are going to do some type of word processing works, there is one word processing application software. For presentation purpose, there is a separate application software, that is the presentation software. The application software, you can say, application software is needed. Application software is the set of programs which is essential to perform a task or job for us only. Application software can be categorized into three types. One is your utility software, general purpose application software, and special purpose application software. Application software application software cannot run without system software. And here, application software can be categorized into three types. One is utility software, general purpose application software, application software, and another kind is some special purpose application software. Special purpose application software. I told you that one application software is intended to do a particular job. Means one application software cannot be used to perform another kind of jobs, another types of jobs. For example, word processing application software is to perform, to do any type of word processing works. If you use the MS Word and if you want to create a document and to change some fonts, to change the background colors, to change the size of the word, size of the text, then sir, there is a particular application software, and that application software is known as MS word processing application software. And this application, word processing application software, is not here to perform any type of presentation jobs. For presentation jobs, there is separate application software, that is presentation application software. That's why I can say that one type of application software is here to perform one kind of job. Means using one type of application software, you cannot perform several kind of jobs. That is one limitation of application softwares. And here, from its work point of view, from its nature point of view, from its tax handling point of view,
application software is categorized into three types majorly. One is utility software, second one is the general purpose application software, and third one is the special purpose application software. So utility software particularly, so what is utility software? Utility software is one kind of software generally which is used, or this application software is a set of programs which is used to help to analyze, configure, optimize and maintain the computer. So you can say utility software is one type of software. Utility software is the set of some programs which is used to perform, which is used to help analyze, configure, optimize and maintain the computer. The utility software is here to do this kind of things, and students, besides operating system and device driver, as you know that operating system and device driver is essential to interact with the hardware part of the computer system. To interact hardware part of the computer system, to make the hardware part active, we must need one software, that is software operating system. I already told you that. And second type of system software, that is the device driver. Device driver is also required to make a particular device active. Besides that, except operating systems and device driver, there must be some kind of softwares which are essential to make your computer efficient and trouble free. Okay. The application software, the utility software under the application software, this kind of utility software is essential, and it is, you can say, it is the additional software. Application software, so utility software is the additional software besides operating system and a device driver. And here the intention or the goal of that utility software is to make your computer more efficient, and it make your computer trouble free. Okay. The utility software is here to analyze, configure, optimize and maintain the computer. It means that utility software is here to do some type of jobs, and from its job point of view, further utility software is divided into some kinds like compression software. The compression software is one type of utility software. Second one is backup software. Backup software is one kind of utility software. Okay, I लिखिए categorize करिए utility software. The utility software is, there are some examples of utility software. Utility software example 1, compression software. Second part is the backup software. And another kind of utility software is like disk defragmentation. Disk defragmentation. Disk defragmentation software, and one is antivirus software. And another kind is text editor.
एडिटर ये लिख दो this is text editor. Text editor software. So here look at some examples of utility software. One is compression software, second one is the backup software, and third one is the disk defragmentation software, and fourth one is the antivirus software, and last one is text editor software. We will discuss one by one. What is compression software? From its name point of view, as its name, you already know that compression means reducing the size. Compression means reducing the size, and decompression is that the reverse of the compression means you brings the size into its original form. So here, why compression software is needed? Compression software, suppose there is a large size file or programs, and that's size files, you want to transfer that files to your friends through internet. So in that case, the size doesn't allow that large size doesn't allow to transfer these files from one computer to another computer. That's why here we are going to compress or reduce the size of that files. That reducing task can be possible by this software, that the compression software. The compression software कौन कहूची गोटे फाइल जदि गोटे लार्ज साइज रे गोटे फाइल थाए बा प्रोग्राम्स अच्छी से प्रोग्राम को बा फाइल को जदि आम गोटे कंप्यूटर रु आ गोटे कंप्यूटर पाखु ट्रांसफर करने चाहूँगी सेतेबेले कौन होची से साइजटा ही आम पाई गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करे से लार्ज साइज को आम ट्रांसफर करि पारंते नाही इंटरनेट रे सेतेबेले आम कौन करती से फाइल को फाइल साइज को आम रिड्यूस कर दियंती कम कर दियंती फल गोटे जतिक स्पेस ये नौला स्टोर होगापाई ताठार कम स्पेस रे से फाइलटा स्टोर हो रही पारुचे जेडे ये जेतले आम छोट साइज करता रिड्यूसिंग साइज और स्मॉल साइज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द इंटरनेट और सपोज you can reduce the file or you can reduce the size of the file or size of the program when it is not in use. तम कंप्यूटर भीतर अच्छी एंड ये मोर स्पेस कंज्यूम करुची एवं ताकू आमे एई समय यूज करू नाहंती आमे खाली स्टोर करके रखी छंती तो एट दैट टाइम जेतले आमे तार यूजेस करू नाहंती सेतेबेले से फाइल बा प्रोग्राम को आमे कंप्यूटर रखिया पई बा स्टोरेज यूनिट रखिया पई आमे जदी कंप्रेशन कर दउचंती कंप्रेस कर दउचंती ताले से कंप्रेस्ड फाइलटा बहुत कम स्पेस ने कि कंप्यूटर स्टोर हेगी रही पारिबो या फल कोन होछ ना अननेसेसरी मेमोरी गुडिक बा अननेसेसरी जो मेमोरी स्पेस गुडिक अछि कंज्यूम हो नाही तो फ्री स्पेस हमें पाई पारछंती जोटा कि अलगा कैमरा में यूज करि परिबा तो दैट्स व्हाई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इज हियर to reduce the size of our programs or files or to you can say to compress the size or to decompress the size when if you want to transfer some files through the internet हम कौन करिया पड़छि the files must be reduced from its size point of view तेणु ये जो कंप्रेस्ड एंड अनकंप्रेस्ड करूछंती जेतले आम ताको यूज करबा गोटे फाइल को आम स्टोर करके रखिले सो फाइल टे आम सपोज किसी स्पेस नहीं जाऊँगी तर 1 GB स्पेस नहीं जाऊँगी गोटे फाइल आम 1 GB स्पेस रखी ताकू जो आम कंप्रेस करते आम कौन कर 500 MB रे रखी पार्छंती ओके तो 500 MB जो रखुंट तो रिमेनिंग 500 MB टा कौन होची जे यूज हो पार्छ अन्य केस एवं 500 MB स्मॉल साइज को गोटे जगह अन्य गोटे जगह को ट्रांसफर करने इट इज इजी तो इट इज इजी
to but you can handle it in an efficient way at the time of transferring as one file small sized from one computer to another computer. गोटे कंप्यूटर रु आउ गोटे कंप्यूटर को जेतले आमे कोनोसी फाइल को ट्रांसफर करिया चाहउछंती सेतबेले कोन हुए जोटे स्मॉल साइज थाए देन स्मॉल साइज गुडी आमे इजीली हैंडल करि हुए इजीली ट्रांसफर करि हुए तेन फरे आमे जेतले गोटे 1 GB फाइल को आमे 500 MB फाइल ले कन्वर्ट करिया पय चाहउछंती अर्थात को रिड्यूस करिया चाहउते त साइज को सेतले आमे कंप्रेशन सॉफ्टवेयर रा आवश्यक करछंती. क्लियर दिस इज the use of compression software एवं आउ कोन हो जदि आमे एई फाइल को पुणी आमे ओपन करिया पे चाहउछंती ए फाइल टा को ओपन करिया पे चाहउछी ताको डिकम्प्रेस करि परिया एठी आमे कोन कले एई पार्ट रे आमे कोन कले कंप्रेस एठी कंप्रेस कले ताको जतला आमे ओपन करछनी पुणी आमे यूज करिया पे चाहउछंती एटा होचे नॉट इन यूज आमे एठी यूज करू ना नॉट इन यूज जदि खाली रखी के ट्रांसफर करिबा बा स्टोर करि रखिबा जतल ताको यूज करिया पे चाहउछनी पुणी ओपन कले त ताको आमे डिकम्प्रेस करि परिबा डिकम्प्रेस करले कोन होची पुणी ये 1 GB स्पेस इन होची एवं ताको आमे open kari pariba. Then this kind of compression and decompression task can be performed using one kind of software. That software is the compression software. And जेतले हम कंप्रेशन करिया करूछंती सेतबेले हम ताको यूज करू ना केवल ताको स्मॉल साइज रे रखुछंती अदरवाइज फॉर ट्रांसफरिंग पर्पस रे हम ताको रखुछंती कंप्रेस करछंती. त एटा को बुझिबा दरकार आमे त कंप्रेस्ड फॉर्म रे रखिछंती सेतबेले आमे ताको यूज करू नाहंती. ओके जेतले यूज करियो पुणी तार ओरिजिनल स्पेस से नबा ओरिजिनल साइज को से कन्वर्ट हो जाउची ताको हमें डिकम्प्रेस हो जाउची. दिस काइंड ऑफ कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय दिस व्हाट compression software. It is one type of utility software and you can say it is one type of application software. Clear? Next, backup software. Now our focus on backup software. The backup software, one thing, before going to backup software, at first we have to know that what is backup. Backup means recovering from abnormal situation to normal situation. The backup file means there is a replicate of the file, there is a copy of the original file, and that original file should be copied into several replicated files. कहेंगे यदि original file if you find any type of damage on the original file or if you lose the original file, if there is some type of situation comes where you are going to lose your important data, at that time to recover purpose there should be a duplicate files, there should be a copy of that original files. So copy of that original file को हमें कहते हैं backup files. That is the, you can say this is the replicate of the original file or copy of that original file. हमें कहिबा हमें तार गोटे duplicate फाइल भी क्रिएट करिक रखी परिबा. डुप्लिकेट फाइल क्रिएट करि रखिले कोन हो ना हमर जतले कोनोसी सिचुएशन ला ओरिजिनल फाइल करप्ट हो जाउची, ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाउची, ओरिजिनल फाइल को मिस कर देउचंदी कोनोसी अनऑथराइज्ड पर्सन से ओरिजिनल फाइल को डिलीट बा रिमूव हो जाउची सेते बेले आमे हमर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडी को इंपोर्टेंट फाइल गुडी को जदि आमे कॉपी करि रखितबा गोटे जगह रे ताहले दैट कैन बी रिकवर्ड. So here backup software is needed to recover from an abnormal situation to normal situations. Or you can say the backup software is very helpful to create some replicates of the original file, or you can say a backup software is used to create some supplementary of the original file. This type of software is used to create some supplementary of the original file. From that supplementary files we can recover the original files, we can recover the important document or important data or files. If there is no backup files,
then it is not possible to recover your missing data or your original files. Suppose आम ये गोटे फाइल गोटे रही very important file, okay, ये तो आम फाइल गोटे रही फाइल 1 रही फाइल 1 गोटे बाद फाइल 1 डॉट डॉक आम गोटे फाइल कर रख वेरी इंपोर्टाट फाइल आमर ये फाइल जदि कौन कारण रू मिस हो गला बा कौन कारण रू डिलीट हो जाए अनऑथराइज पर्सन बाय मिस्टेक को डिलीट हो जाए देन इट इज नॉट पॉसिबल टू what to recover or to find that files in your computers आम कंप्यूटर भितर से फाइल पाइबा नहीं तेणु आम जब फाइल कौन सी अच्छी फाइल 1 डॉट डॉक ताको आम कॉपी कर देछन आम कॉपी कले कॉपी करके आउ गोटे फाइल आम रखते से फाइल ना देछन फाइल 2 डॉट डॉक पूरा सेम ये फाइल रहा ये फाइल से पूरा सेम टू सेम फाइल ओके ये फाइल टाको आम अलग गोटे ड्राइव रखी पारती किंबा आम सेकेंडरी जो स्टोरेज सिस्टम अच्छे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जो पेन ड्राइव कथा कहते कि सीडी डीवीडी आम को स्टोर करके रखी जदि कौन कारण ओरिजिनल फाइल करप्ट होरिजिनल फाइल डैमेज होते कौन आम जो डुप्लिकेट फाइल्स कॉपी फाइल एक आउ थे कौन रिकवरी आम कर आम रिस्टोर कर कॉपी फाइल को आम रिस्टोर करदे ये जो ऑप्शंस ये जो जॉब परफॉर्म होची ये जॉब सेतेबेले संभव जेतेबेले देयर मस्ट बी बैकअप सॉफ्टवेयर आ गोटे कथा मु भूली जाइतिले कहबा को छुआ व्हेन तम यू कैन फाइंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम जदि आम कौन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर कंप्यूटर रे सेतेबेले ऑपरेटिंग सिस्टम सहित किसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बंडल होके आसीता जदि से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो तुम यूज कर ठीक अच्छे ना अदर भेंडर्स को थ्रू आम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किनी परिबा तेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आम साधारणतः ऑपरेटिंग सिस्टम सहित ही आसी था किंतु ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर होची किंतु तुम फाइव ऑपरेटिंग सिस्टम जेकोसी ऑपरेटिंग सिस्टम आण यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से अटैच होगी थाए तुम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज कर यही पर्पज पाई अदरवाइज आम डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अदर कंपनी अदर भेंडर्स को आम किनी परिबा ए कथा को मन रखियो हाँ तो ये बैकअप सॉफ्टवेयर इज वन काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड दैट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट द रिप्लिकेटेड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल फाइल्स इंटेंशन इज टू रिकवर our files if any kind of unexpected situations comes any kind of malicious activities is performed कौन सी गोटे destructive destruction mindset जदि unauthorized persons आम फाइल को करप्ट करुची डैमेज करुची डिलीट कर दउची देन आम डुप्लिकेट फाइल्स रिप्लिकेट फाइल सप्लीमेंटरी फाइल ओरिजिनल फाइल को आउ थे आम रिस्टोर कर ओरिजिनल फाइल को रिस्टोर कर मीन्स आम आम डॉक्यूमेंट को पाई परिबा तो दैट्स व्हाई बैकअप सॉफ्टवेयर इज हियर क्लियर सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को आम गले थर्ड पार्ट कौन कहूँ डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर तो व्हाट डू मीन बाय फ्रैगमेंटेशन तापर आम जीवा डिफ्रैगमेंटेशन को फ्रैगमेंटेशन सपोज ए फाइल is a very large by huge size file there is a very large scale of file okay what a large size ro file is and that file is not possible to store in a one location in that case the utility software splits the file breaks the file into multiple parts you can say utility software here this defragmentation software breaks that large file into small pieces and that small pieces must be stored then small pieces of the file is stored in a scattered manner in a uncontiguous location it means that if there is a large size of file and that large file
but large size file is not possible to store in a single location. At that time, defragmentation software splits that file, breaks that file into small packets or small fragments or small pieces, you can say, and each piece of that file is stored in different location of the disk. And this kind of small part of that file is known as the fragment, and this fragment is placed into different locations, and that locations must be uncontiguous location. Uncontiguous locations mean continuously se bali location udio na thae, continuously paibeni, it is scattered khele hi roithibe. Okay, that is performed by this disk defragmentation software. But here one limitation is that गोटे disadvantage एठी अछि कोन जेताले हमें गोटे फाइल को भांगी के छोट छोट फाइल छोट छोट पीस रे क्रिएट करछोंती ताको फ्रैगमेंट बोली कहउछोंती. प्रत्येक फ्रैगमेंट गुडी को हमें गोटे डिस्क रे डिफरेंट प्लेस रो स्टोर करी रखुछोंती एवं सेटा गोटे अनकंटिन्यूअस मैनर रोचे, अर्थात से कंटिन्यूअसली कौन से गोटे लोकेशन रो नाही. सेते बेले दिस डिफ्रैगमेंटेशन कौन करूची जे कंप्यूटर को स्लो कर दोची. जेता कंप्यूटर को स्लो हो जाउची, जेता आमे पुणी से ओरिजिनल फाइल को जेता रिकवरी करिया पय चाहउछंती, जेता आमे ओपन करिया पय चाहउछंती, सेताले आ गुटिए ए डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन करे ताको फ्रैगमेंटाइजेशन करे. फ्रैगमेंटेशन कला पर कौन हुए जो स्कैटर्ड है कि जो खेले ही कि जो फाइल गुड़ी अच्छी पीस जो फाइल डिफरेंट पार्ट गुड़ी अच्छी ताकू जॉइन कर दिए. गोटे मु पिक्चर करके देखो देख देख गोटे फाइल गोटे अच्छी, सपोज गोटे फाइल रखिला एफ बोली गोटे फाइल एफ नार गोटे फाइल अच्छी. ये फाइल को आम कौन करें किसी छोट छोट भाग में विभक्त कले गोटे छोट छोट पीस करदे एक्स 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 ये छोट छोट पीस करदे वाई भी से करदे वाई